Okay, welcome back. We will be starting today another chapter, that is the pavement design. Okay, we will be talking about the pavement design, where the discussion regarding the different type of pavements, how they are designed, that will be coming to picture. So this is your next chapter, pavement design. Now, previously, in case of the design of the different subjects that we have learned now, we have understood that design means nothing but the section, understanding of the section and getting the different thickness of the different sections through the help of the different type of loading conditions. Alright, so these are the different type of pavements that we generally see. First of all is the flexible pavement, and the second thing is that rigid pavement. Depending on the material, depending on their characteristics, they are actually divided. For easier to understand or easier to remember, these flexible pavements are made with the bitumen, and the rigid pavement is made with the cement concrete. Alright, bitumen for flexible pavement and for rigid pavement it is cement concrete. Alright. Now before going into the design part, let us try to understand how these two type of pavements are built. Okay. Obviously, when we are talking about the pavements, when we are talking about the design, there are few factors that we need to consider. Okay. Now we will try to understand those different type of factors. First factor which is very much important is the traffic. Alright. So traffic here is one of the most important things which is absolutely very much necessary to understand or get the value of the traffic that is moving on the road before going to the design. Whenever we are talking about the design, traffic is the load that is coming. आप लोगों ने पहले RCC design किया है. You have done in the previous semester. In the RCC design, different type of self loads are coming. RCC design नहीं पढ़ा है, reinforcement concrete का design नहीं पढ़ा है. इस semester में है. Okay. For this semester you are studying this thing. Okay. So when the design is going on, you need some section to design. आपको कोई section का design करना है, ठीक है? तो वहाँ पे section में क्या होता है? Depth होता है, ठीक है? उसमें reinforcement होता है, और ये सारे जो चीजें हैं वो डिपेंड करेगा उस सेक्शन का सेल्फ लोड और उस सेक्शन के ऊपर जो चीज रहता है, ये जो फर्नीचर वगैरह, जैसे कि ये वाला जो क्लासरूम है, यहाँ पे जो स्लैब है, ठीक है, इसका अगर डिजाइन आप लोग करना है तो स्लैब का एक सेल्फ लोड आएगा. सेल्फ लोड कैसा आएगा? उसका जो वजन है, यूनिट वेट है, उसके सहारे जितना भी लेंथ के लिए ये सरफेस बनेगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. Then we have these furnitures resting above it, the people moving above it. Okay, these are called as live loads. Okay, ये change हो सकता है, so that is why these are live loads. Self weight change नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे मान लीजिए 20 लोग बैठे हुए हैं, ये 60 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये नंबर चेंज हो सकता है. इसीलिए ये जो वैल्यूज है ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इसको लाइव लोड बोला जाता है. तो डिजाइन, so the traffic considerations are coming as the load in this particular thing. Now these details of the traffic load will be dealt in another way. Okay, that means the number of axle moving on the road surface is the load that is considered. Okay, number of axle load. Okay, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट कैलकुलेशन है. एक और टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगा बाद में, that is ESWL, equivalent single wheel load.
ठीक है, ESAL इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड, इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोड्स है जो आपको बाद में जानने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पहले देखिए लोड जो आ रहा है वो ट्रैफिक की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये पहला चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज द obviously when you are talking about the different road construction or any construction of the civil engineering related construction, we have to deal with the materials. So we have to get the different properties of the materials through the material testing that is conducted in the lab. For bitumen, we have different type of testing like penetration test, viscosity test, ductility test, softening point test, okay, specific gravity test. All of these tests are there. Another material, other than the bitumen, we have aggregates. Okay, aggregates are there. Now, when we are talking about the aggregates, obviously different type of aggregate test will be done, like the crushing value test, impact load test, abrasion value test. Okay, all these tests will be conducted under this. So these are the materials that are also very much important when we are talking about the road construction. Third, environmental conditions. Why environmental condition is important? Because when we are going for the construction, we need to know the average temperature as well as the average rainfall in that area. According to the average rainfall, we will prepare the slope of the road. According to the average temperature of that area, we will be constructing the road in such a way that it will not get affected by the temperature. Why? Bitumen, आपको पता है bitumen का टेस्ट जो है softening point टेस्ट आपको बोला गया, flash and fire point टेस्ट आपको बोला गया, ठीक है। इन दोनों टेस्ट में क्या होता है, जो bitumen का जो टेम्परेचर के साथ कैसा उसका रिलेशन, किस टेम्परेचर में जाके वो पिघल जाएगा, किस टेम्परेचर में जाके वो जल जाएगा, ठीक है, ये जानना पड़ता है। तो उसी कंडीशंस को हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी यूज करेंगे, ठीक है। अनदर पार्ट इज द फॉर द रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में क्या होता है, कंक्रीट के साथ जो होता है सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट का एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है विद द टेम्परेचर। इसीलिए जो रिजिड पेवमेंट बनता है, रिजिड पेवमेंट में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी यूज टू प्रोवाइड सम टाइप ऑफ जॉइंट्स। Joints could be of different types or different thickness. That is another thing. But according to the environmental condition, we may need to provide some joints in the rigid pavements. All right. Another part is there. It is the speed, which is also known as design speed. Okay. We have another part as the design speed. Okay, design speed is nothing but the speed that we have calculated in case of the geometric design, or you have considered in the case of the geometric design. With the speed also, the road conditions will be changing. Okay, you may not have the similar speed at every condition, each and every condition. Like if there is any school or any hospital, your speed will be restricted. If your speed is higher, the vibration caused due to that vehicle or the dynamic load coming into that area will be higher. That is why the materials will be having different properties, or the thickness of the pavement, that is the design that we are talking about, the thickness of the pavement will be different. So design speed is also another important factor that we need to consider when we are actually talking about the design of the pavements. Okay. There are several other factors, but these are the four most important factors that you need to take care. Okay. Regarding the materials, one more important thing you need to remember. That is another important material where each and every structure will be resting. It is the soil. Okay. So you have to provide the report of the soil testing. You have to take care of the different properties of the soil accordingly. Most important two properties are there. One is its bearing capacity, which is
a relative measure of, or which is a relative measure done through the CBR test. Okay, another part is the moisture content. In the recent past, we have seen that due to the heavy rainfall, there are so many areas where the soil erosion is taking place. So that means the moisture present in the soil is actually causing the soil to flow from one part to another. So that is why, though in those areas the soil is being eroded. Okay, soil के वहाँ पे erosion हो रहा है. All right. So these are the two properties of the soil that you need to remember when we are talking about the different type of factors in case of the rigid pavement or flexible pavement design. Okay, so among the two pavements, we will first start with the flexible pavement design. So first of all, we will be talking about the flexible pavement. In the flexible pavement, in each and every pavement and each and every structure, the bottommost layer is nothing but the soil. Here the soil is known as subgrade. Okay, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा डिफरेंट लेयर्स का. ये जो सॉइल है उसके ऊपर रहेगा. सॉइल का पहले प्रिपरेशन होता है, एक स्टेज होता है, उसको बोला जाता है इसको प्रिपरेशन करते हैं. Soil preparation is there. The soil preparation is done in various ways. Okay, first of all, you need to understand the CBR value. CBR value कैसे करते हैं? जो आप लोगों ने कोड कटर सीखा था, कोड कटर का मालूम है? कोड कटर के सहारे एक सैंपल लेके आएंगे, उस सैंपल को ले जाके लैब में आपको टेस्ट करना होता है. ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं और 96 आवर पानी में उसको डुबा के रख सकते हैं, फिर सोप सीवियर वैल्यू ला सकते हैं. या फिर उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसी सॉइल को एक थोड़ा सैंपल ले लीजिए, मॉइस्चर कंटेंट देख लीजिए और उसके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में इसको रखिए, पानी छिड़किए. अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसका नहीं अचीव हो रहा है, फिर उसके ऊपर रोलर चलाते हैं. ठीक है, उसके ऊपर रोलर चलाने का कारण यही है उसका कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन. ऑब्वियसली इन दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन सॉइल को पहले आप लोगों को कॉम्पैक्ट करना होगा, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आएगा. ठीक है, उसके ऊपर 3 लेयर्स रहता है. इसको बोला जाता है सब बेस लेयर. ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर आएगा. ये है आपका बेस लेयर और इसके ऊपर एक और लेयर आएगा, दैट इज योर सरफेस लेयर. ओके, ये जो सरफेस लेयर आप लोगों को दिखता है रोड के ऊपर, वही है एग्रीगेट और बिटुमेन. ये दोनों ही चीज रहता है. नीचे वाला जो लेयर्स रहता है यहाँ पे ज्यादातर एग्रीगेट से रहता है. कहीं कहीं पे फाइन एग्रीगेट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, नहीं है कोर्स एग्रीगेट है डिफरेंट साइज का. ठीक है, और यहाँ पे ये जो सरफेस है ऊपर में, ठीक है, इसको कभी कभी वायरिंग सरफेस भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वायर मतलब उसका जो इरोशन होता है, ठीक है, वो ऊपर वाले लेयर में ही होता है. कभी कभार ये वाला लेयर पूरा उठ जाता है, ये वाला लेयर दिखता है आप लोग, पत्थर दिखता है ना रोड पे तो वो है बेसिक. ठीक है, हर एक लेयर का अलग अलग थिकनेस है. ठीक है, थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिटेल्स में हम लोग बाद में समझेंगे. ठीक है, पहले ये समझना होगा आपको कि ये जो तीनों लेयर्स है यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. ठीक है, तो ये है आपका
सरफेस, इसके ऊपर एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है। इस गाड़ी चलने की वजह से इसके ऊपर लोड आ रहा है। आप जस्ट कंसीडर दिस वन, यहाँ पे एक लोड आ रहा है। लोड आने की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया था पहले कि पत्थर, okay. Now when the load is coming, first of all the load is directly coming into these areas, okay. लोड आने के बाद उसका क्या काम होगा, नीचे वाले जो लेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। इट विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इनटू द लेयर्स present bottom of it, and wherever there is any contact between two aggregates, if the load will be distributed, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में आएगा, यहाँ से इन दोनों में जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले लोड डायरेक्टली इधर में आ रहा है, ठीक है। ये इसका काम होगा कि जितने भी पत्थर इसके कांटेक्ट में है, ये आपको दिख रहा है 2 डायमेंशन, कंसीडर इट एज 3 डायमेंशन। लोड जो होता है 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन में क्या होता है, चारों तरफ जितने भी पत्थर है इसके कांटेक्ट में, उसमें ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब इसका इंटेंसिटी घट रहा है। The load intensity is actually reducing as we are moving to the bottom, तो वो component में divide हो रहा है, ठीक है। So in this way the load is actually distributed. This is called as drain to drain distribution. दाने से दाने का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, that is drain to drain distribution। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में drain to drain distribution, ठीक है। ये drain to drain distribution इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कॉम्पैक्शन किया जाता है, हर एक रोड सरफेस जब बनाया जाता है, मिट्टी का कॉम्पैक्शन हो गया, इन सारे जो लेयर्स बन रहा है, ये जो सारे लेयर्स है, इनके ऊपर भी वो कॉम्पैक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीज आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो लेयर है इसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो लेयर है ये नीचे की तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी भी कम हो रहा है। लोड इंटेंसिटी कम होने का मतलब है उसमें कम फोर्स का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अनदर थिंग, जब लोड ज्यादा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस, यू नो ऑल दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड पर यूनिट एरिया। एरिया का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस का वैल्यू घटेगा, ठीक है। सो इन दैट केस द ओवरऑल स्ट्रेस विल आल्सो डिक्रीज as the load is increasing. So in this case, the drain to drain distribution is happening, and as a result, the stress is being reduced and the load intensity is also reduced. And one more thing, as we can see here, the load is spreading. So this distribution is happening in this trapezoidal. Okay, in this trapezoidal way. तो आपको ट्रापेजियम जो है उसका शेप पता है, इसका लेंथ ज्यादा होता है इसके मुकाबले,
कि अगर 3 डायमेंशनल होता है तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गया है नीचे। एरिया ज़्यादा होने का मतलब ये है कि नीचे जो स्ट्रेस है वो कम हो गया। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट का यही काम है कि लोड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है नीचे की तरफ ताकि वहाँ पे जाके बहुत अच्छी तरीके से ये जो वैल्यूज है ये घट जाए। ठीक है, स्ट्रेस का जो इंटेंसिटी वो कम हो जाए। ठीक है, so this is your load distribution pattern in case of the flexible pavement.